Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine, beta. Now yesterday we discussed, beta, in our class about their gravitation potential energy, how we can find their gravitation potential energy. So we discussed their total amount of the work done by any massless body coming from one to another point. That work done we will call it gravitation potential energy. Okay, next our topic, our escape velocity and the orbital velocity. Some about this topic also we discussed between last class. Escape velocity, there is a two type of the velocity we will do. Then any satellite is a revolving around this one, our earth also. Then during the revolution which velocity will be act there, that we will call it orbital velocity. And escape velocity, by which velocity, that any body is coming out from the earth's surface, from the earth gravitational field, then that velocity required, minimum velocity which is required to come out from the earth gravitational field, then we will call it escape velocity. Okay, so how we can find this escape velocity, beta? Then escape velocity we will find it this one, and after that we will solve their orbital velocity. Okay, first we will take their escape velocity. Then yesterday I told you that is a minimum velocity required to eject any minimum velocity required to eject any object from earth surface, you can say earth in gravitational field. Okay, earth gravitational field is known as the escape velocity. Okay, what is escape velocity? That is a minimum velocity required to eject the object from the earth gravitational field. Okay, for example, this one our earth, बेटा, कि अर्थ से हम किसी बॉडी को इजेक्ट कर रहे हैं और कम से कम इस वेलोसिटी के साथ डाल रहे हैं कि वो वापस ही ना आए अर्थ की ग्रेविटेशन. देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है. अगर हम उस स्पेस से, उस फील्ड से बाहर अगर उसको निकाल दे तो क्या होगा? अर्थ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी. इट विल बिकम आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की, इसका फील्ड अगर फॉर एग्जांपल अर्थ का फील्ड ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ इजेक्ट करें कि वो इस फील्ड से क्या है, बाहर निकल जाए. अब बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा? अर्थ उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी. देन बॉडी विल बी इजेक्ट आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, नेवर विल कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, उसके बाद वो वापस अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाएगी. दैट वेलोसिटी वी विल कॉल इट escape velocity. क्या बोलेंगे? escape velocity. If m is the mass of the earth and r is the radius of the earth, आप mass लेके चल रहे हैं, m, r is radius, and this body is ejecting, we are going in upward direction. Second object we are taking m and it is going in upward direction. Then how you can find this escape velocity कि कम से कम क्या velocity रहेगी? This one here, symbol of escape velocity, we have to find out escape velocity. So here we are taking, beta, consider a body of mass m is moving falling, is small, थोड़ा सा, is in upward direction from earth's surface. That is never come back on earth सरफेस, कि वो वापस अर्थ के ऊपर ही ना आए,
तो उस वेलोसिटी के साथ उसको डाला गया है. सो कमिंग इजेक्टिंग दैट बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस से बेटा ऊपर की तरफ डालेंगे तो कम से कम यहाँ वो वेलोसिटी जिसके साथ जा रही है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टिंग आउट, दैट वी विल कॉल इट काइनेटिक एनर्जी. So from here we are writing beta this one again, that body we are ejecting in upward direction, let it will reach here r distance. Okay, from here to there, then p, and here small distance your q, then this one distance we can write there dr, and coming out up to the infinite. कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ. ये क्या हमारी अर्थ है, क्लियर, जिसका मास हमने m और r एज्यूम कर रखा है. नाउ बॉडी गोइंग फ्रॉम r टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है. सो एनर्जी act due to gravitational force, we can write there beta E equal to your gravitational force, we can write there, we will find beta this one here due to small work done. Okay, so P to Q, let P to Q is small displacement for small is work is done, so how we can write for small work done, dw equal to f dr. So here we can write beta which type of the force is acting there, gravitational force, and gravitational force we know about this one g, m is mass of earth, second mass of object we have taken beta small m. कहाँ जा रहा है? This one direction going upward direction from here to there small r, and here distance from there let we are taking there r distance r square. So here we are writing this one here small work done. For the total work done, then we will take integration. For total work done, taking integration on both sides. Taking integration on both sides. So here we can write beta dw equal to your gmm by your r square dr. Integration, initially work is done जीरो कब रहेगा? जब बॉडी कहाँ है? सरफेस पे है, एट दी आर डिस्टेंस. कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? आर टू इनफाइनाइट पे डिस्टेंस कर रही है. कि अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है बोथ द सरफेस एट आर डिस्टेंस वी आर कॉलिंग इट, एंड गोइंग अप टू द इनफाइनाइट, सो इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू योर आर ओनली, एंड फाइनली वर्क बिकम्स योर डब्ल्यू. देन हियर गोइंग अप टू द इनफाइनाइट, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है डब्ल्यू, दिस वन. Okay, so here we can write there gmm, this one your constant factor, so here we can take out this one from integration. So here we can write there integration 0 to w, then gmm will be remain constant, so inside left 1 by r square dr, r to infinite. कहाँ से कहाँ तक? r से infinite तक. So from here we can write there beta gmm here will be there 1 by r, integration of 1 by r. I told you how you can take integration of nth value, this one your n power will be there with respect to your x, so here 1 we will add in this one power, then after the adding then we will write downside same. So same here for the 1 by r square we can write there r minus 2 dr. So we will add 1 in this one power, after adding then we can write there r minus 1 plus 1 minus 2 plus 1. So here we can write there minus 1 by r. I hope you understood beta how you can take integration of this one. So here left here minus 1 by r. Clear? Infinite to our r. Now put the limit of this one.
here as we will solve this one, then work W will be there, limit 0 to W. Final minus initial, then here will be W only. After that, beta G, M remain constant, putting limit here, minus 1 by infinite plus here 1 by R. I hope you understood, beta. Minus 1 by R we will write. 1 minus is already is there. So minus minus plus will become. So here 1 by infinite we can write it 0. So work done we can write there G M by R. And this work done we can write there gravitation potential energy when this one here gravitation potential energy when body is going out from earth surface to infinite. देखो हमने कल किया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया था बेटा वो क्या आया था, U इक्वल टू यर माइनस GMM बाई R. Yes na, this one formula came yesterday. Which one derivation we have done, gravitation potential energy. तो minus किस लिए आया था, that time बेटा body is coming from infinite to any reference point, then here will become negative. But today that is a opposite direction is there. Now we are ejecting our body from earth to our infinite point. उस infinite point तक जा रही है जहाँ पे क्या हो जाता है, वो gravitation field से बाहर निकल जाती है. Here that's why here we have limit opposite. That's why here will came here positive GMM by R. Okay, now as body ejecting with velocity VE. Okay, किस वेलोसिटी के साथ इजेक्ट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी के साथ इजेक्ट कर रहे हैं. So here kinetic energy will be act beta, that will be equal to half m. M is the mass of that body which is coming out. Then v is the velocity by which we are throwing it. So half m square. Here this one equation beta, first one equation, this one our first one equation and this one our second equation. एक relation ये आ गया बेटा energy का, एक relation ये आ गया. So two relations are there of energy. Now by using these two equations, we can write here by using equation first and second. Okay, we will use first and second equation. Now here we can write beta Gm by R and here half mv square. So here we can write there U equal to your G M by R, and second equation your kinetic energy, that is equal to half m v square. So equating both relation, now here we can write there 1 by 2 m v square divided by your Gm by R. Now solve this one, m to m cancel out, so here left your v square beta 2 Gm by R. I hope you understood till here. So you can write there under root this one side, then VE equal to under root 2 Gm by R. G is the universal gravitation constant, M is mass, and R is your distance. Okay, R is here, where R क्या हमारा बेटा, R equal to capital R plus your height. Okay, small r will be capital R. देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, दैट वी विल मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर इसकी रेडियस r है तो बॉडी हमने यहाँ रखी है, तो यहाँ तक की हाइट क्या हम h लेके चल रहे हैं. सो दिस वन विल बी योर स्मॉल r, दिस कंप्लीट डिस्टेंस. इफ बॉडी विल बी वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, इफ ऑब्जेक्ट विल बी नियर टू earth surface, near to the earth surface, so here we can write there r is very less than, so we can write there h is very less than r radius. Radius है, earth की radius क्या होती है 6400 किलोमीटर. नो ना about this one,
6400 किलोमीटर। तो अगर बॉडी क्या है बिल्कुल ही सरफेस के नियर है तो हम क्या कर देते हैं, हाइट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी लेस देन दिस वन। सो हियर वी कैन राइट बेटा r is so small r is similar to the capital R. Now putting here then v will be there 2gm by your capital R. Clear? So after this one beta, this one came your gm by r. Now as we know this ve came our under root 2 gm by r. Now as we know acceleration due to gravity on surface, we have done acceleration due to gravity on the different three position, surface, height and depth. So on the surface we know about this one, g is equal to your gm by your r square. So by using this one formula we want to convert this one in form of small g. So this one our your third equation. Now from equation 3, now putting here as we will compare this one beta, then 2gm by r. So from equation 3 we can write here multiply and divide by r. ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद योर r. Okay, so after multiply and divide then here we can write there 2gm r by your r square. So here came beta this one factor and this factor we can write equal to your small g. Yes na, small g equal to gm by r square. So this one factor equal to small g. So here we can write beta ve equal to our under root 2 g r. This one our escape velocity when body will be coming out from the earth surface. Okay, as we will put their value of these terms, so here we can write their under root 2 g for the earth 9.8 meter per second and your r is our radius of our earth beta 6400 kilometer. Clear? Convert this into your meter, kilometer, this one here. Now as we will convert this one in your meter then it will be 6.6400, then it will be this one. Okay, so it will be meter, then solve this one beta, then v will be equal to 11.2 kilometer per second. Okay, किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, इसको किलोमीटर में ही रखेंगे. This one keep in kilometer only because our velocity come in kilometer only, 644 kilometer. This one convert into meter, kilometer per second. So as we will solve this one, this one escape velocity will be equal to 11.2 kilometer per second. Means agar within 1 second we are throwing object with this one velocity 11.2 kilometer per second, then body will be never come back on the earth surface. This one our escape velocity. I hope beta you understood how you can find this one. Again I am telling you from initially. Then escape velocity beta, minimum velocity required to eject the body from the earth gravitation force. वो velocity जिसकी वजह से हम क्या है अर्थ की gravitation से बाहर निकल जाते हैं, उस velocity को हम क्या बोलते हैं, gravitation escape velocity. और ये कम से कम अभी find किया हमने, क्या होती है 11.7 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी. अगर इसी वेलोसिटी के साथ हम बॉडी को इजेक्ट कर रहे हैं तो वापस अर्थ की एटमॉस्फेयर पे नहीं आती. इसका रीजन क्या है कि वो फील्ड से बाहर निकल जाती है. अर्थ नेवर बी अट्रैक्टेड दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सरफेस, उसको सरफेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती. सो ड्यूरिंग दिस वन इजेक्शन, दिस वन विद दिस वेलोसिटी इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, इस केस के अंदर क्या निकाल लेंगे हम, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम उसको इजेक्ट कर रहे हैं. तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी. तो दिस वन इज कमिंग आउट
अर्थ एटमॉस्फेयर। तो दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स हियर वी विल फाइंड देयर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इस फोर्स की वजह से एनर्जी कितनी लग रही, कितना वर्क कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक निकलने में उसने कितना वर्क किया। तो वर्क ऑलवेज स्टोर इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल बी योर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों एनर्जी को क्या हम इक्वेट कर देंगे। आफ्टर द इक्वेटिंग दिस वन एनर्जी वी विल ड्राइव बाय यूजिंग योर ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ से आने के बाद बेटा कीप इन माइंड ऑब्जेक्ट वी आर कीपिंग योर आर टू इनफाइनाइट। कहाँ से आ रहा है, आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट पे जा रहा है कि ताकि वो फील्ड से बाहर निकल जाए। तो हमने वर्क किया, कितना वर्क किया बॉडी ने, gm/r। okay, and this one will be equal to your kinetic energy half m²। equating both equation, then after the equating then escape velocity will be left here √2 gm/r using this one। then here solve this one beta, after the putting value of these terms then your answer will be there। आफ्टर द पुट वैल्यू ऑफ दिस वन हियर कंपेयर विद स्मॉल जी के लिए हमने क्या ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म में आ जाएगी स्मॉल जी की वैल्यू में। तो आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 gr। सो पुट हियर वैल्यू, देन आफ्टर द पुटिंग वैल्यू देन इट विल बिकम 11.2 km/h। आई होप बेटा यू अंडरस्टूड दिस एस्केप वेलोसिटी। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी। Thank you for watching today our video. Have a nice day.